All right, so recording has started. Everybody has put their attendance also. So I guess Google Meet has introduced some features. It may be visible on your screen. I am not sure whether it is visible on mobile screen or not, but it is visible on computer screens. All right. So let me just present my tab. Yeah. So today we are going to continue with networks subject. Good evening, Shubham. So in the last class, I guess we have seen two-port networks, and I said there is one example I want to take, which may be asked in the exam itself, and it has been asked in recent times as well. So today we will start with that example only, and then we'll take new topic. So just a second. So guys, example is like, let me just draw the figure so that you will understand the example. Let us suppose we have a two-port network. Let us suppose we have a two-port network here, and this is our input terminal, and this is output terminal. Here we have one resistance instead of voltage source. Okay, so this is V1, this is I1, this is I2, and this one is RL. And let us suppose I0 is flowing in the circuit. I0 and I2 are nothing but same, but since they are in opposite direction, their value will be opposite as well. So the question would be like, let us suppose for a condition when V1 is equals to 10 volt and R1 is equals to 2 ohm, then I0 is 1 ampere. I'm talking about this I0. And when V1 is equals to 10 volt, but value of R2 changes to 1 ohm, then I0 becomes 4 ampere. So these two are conditions given to us, and we have to calculate. Let us suppose we have given V1 is equals to 6 volt and RL is equals to 5 ohm. So in that case, we have to find out I0. I0 is equals to what? So this is the question. I think this question has been asked in the examination of 2017. Not this one actually, but this type of example. So how do we solve it? Okay, so see, what is given and what is asked, that is important. In all three cases, we have given V1. We don't have I1 here. I1 value of I1 is not given. Value of I2 is given. See, this is actually the value of I2. I0 is nothing but value of I2. And since this is I2 and it is flowing through some resistance, so will be some voltage will be there across this resistance RL, right? So this is nothing but V2. So we have V1, V2, and I2. Now, which are those parameters in which we don't need I1 and we can calculate the things by using V1, V2, and I2 only. So do you remember any you have any guesses कि हम यहाँ पे कौन से parameters use करेंगे? Z parameters में now see I'm gonna revise it quickly. Z parameters में हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज V1 और V2 के लिए फॉर्मूला है V1 इज इक्वल्स टू होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2. V2 के लिए होता है फॉर्मूला Z21 I1 प्लस Z22 I2. सो यहाँ पे I1 है मतलब Z पैरामीटर्स तो हमें यहाँ पे यूजफुल नहीं होंगे. Now Y पैरामीटर्स होते हैं I1 और I2. So I1 is equals to Y11 V1 plus Y12 V2 and I2 will be equal to, okay,
I2 will be equal to Y11. Okay, is there any problem, Shubham? All right, no problem. So I2 will be equal to Y21 V1 plus Y22 V2. So यहाँ पे हम I2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसमें? Y पैरामीटर्स में। लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। अगर ऐसे ही हम मतलब एक ट्रायल लेते रहे कि कौन से पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं, तो सबसे आसान जो हमें जा सकता है दैट इज ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। अभी ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसमिशन पैरामीटर्स आर इन द फॉर्म लाइक V1 एंड I1। ठीक है, तो V1 के लिए फॉर्मूला होता है A V2 minus B I2. So this seems to be a perfect formula to solve this example, right? Now, how do we do it? See, we know that V1 is equals to A V2 minus B I2। अभी यहाँ पे हमें I2 की वैल्यू नहीं दी है, और I2 की वैल्यू दी है, और V2 की वैल्यू हमें नहीं दी है, हमें कैलकुलेट करनी है। सो मैं पहला फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मुलेट करता हूँ, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू V1 10 है, ठीक है, पहले के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ। सो 10 A हमें एज इट इज रखना है। नाउ व्हाट विल बी V2? R1, और इट इज RL, सॉरी इट इज RL into I0, that means 2 A2 plus it would be 1B. See, B is as it is and I0 is 1, that means I2 will be minus 1. So minus minus becomes plus, and we have a formula, that is I can write this formula as 10 is equals to 2A plus B, right? So ये formula मैंने बना लिया for first condition. Now for second condition also V1 का वैल्यू 10 ही है, A का वैल्यू तो A ही रहेगा, हमें पता नहीं है A का वैल्यू क्या है। आफ्टर दैट we have to write here V2। V2 क्या होगा? V2 होगा 4, सो A इंटू 4, यहाँ पे भी प्लस होगा, सो 4B, राइट? B इंटू I2, I2 यहाँ पे -4 है, सो सेकेंड फॉर्मूला क्या हुआ हमारा यहाँ पे? 10 इज इक्वल्स टू 4A प्लस 4B। सो हमें इस तरीके से दो फॉर्मूलाज यहाँ पे मिल गए। नाउ दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हम इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो कैन यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर दीज फॉर्मूलाज? इन दो फॉर्मूलाज का यूज करो, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैन यू डू इट? A is equals to 2.5, Raman, do it again। B is equals to 5 or -5, 5 or -5, चेक, ओके। सो जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं मैं उनके लिए सॉल्व करता हूँ, ओके। सो सी, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 4A प्लस 2B। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, सो साइन चेंज हो जाएगा सबका, 4A कैंसिल हो जाएगा। नाउ -10 -20, it is -10 only, is equals to 4B minus 2B is 2B, so B is equals to क्या आया? -5 आया, ठीक है। B is equals to -5 and similarly we can find out A is equals to 7.5। तो ये हमें दो वैल्यूज मिल गए। तो अभी इन दो वैल्यूज से हमें क्या करना है? नाउ सी, अभी हमारा जो नया फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला क्या बनेगा? सी, यहाँ पे इट वुड बी V1 इज इक्वल्स टू, मैं A की वैल्यू रख देता हूँ 7.5 V2 एंड B की वैल्यू है -5, सो इट वुड बी माइनस माइनस प्लस 5I2, ठीक है। तो ये अभी हमें यहाँ पे एक प्रॉपर टाइप का फॉर्मूला मिल गया। तो इसमें हम ये कंडीशन रख सकते हैं, अभी V1 की वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट है, 7.5 तो एज इट इज रहेगा। V2 क्या है? व्हाट इज V2? V2 इज, व्हाट इज V2 गाइस? टेल मी। 5I0 it should be,
RL into I0, that should be 5I0, isn't it? So it is 5I0 and plus 5 as it is. Now what is I2? I2 is nothing but minus I0. All right, it is minus I0. So I guess this is now easy to solve, isn't it? So 6 will be as it is. I hope my voice is not fluctuating. Okay. So 6 as it is, and 7.5 multiplied by 5, that would be near around 37.5 I0 minus 5 I0. So 6 would be equal to 32.5 I0, and I0 will be equal to 6 divided by 32.5 amperes. So this is how we find out the value of I0. Okay, so here I have used transmission parameters, but you can use any of them. Like I told you कि हम y parameters की मदद से भी इसे find out कर सकते हैं. और not only this, if you remember h parameters. h parameters में क्या होता है? h parameters में जो हमारे इनिशियल्स है उसे हम v1 और i1 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सॉरी v1 और i2 से. और h इनवर्स जो है उसमें i1 और v2 होता है. तो जो v2 का फॉर्मूला है, v2 इज इक्वल्स टू h इनवर्स 2 1 v1 प्लस h इनवर्स 2 v2. ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं. जस्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट द वैल्यूज दैट आर अवेलेबल, वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला ओनली. ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है. ऑलराइट, दैट इज बीइंग सेड. नाउ दैट्स अबाउट टू पोर्ट नेटवर्क्स पे इसे इसके बाहर का कुछ आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है. ओके, now we'll start our new topic, that is introduction to transient response. All right, so let me just put the heading, introduction to transient response. Now guys, we have seen transient response term in the control system as well. What exactly is transient response? So uh, you know, like when we have capacitors and inductors in circuit, in that case what happens, voltages and currents, they don't change directly or quickly. Okay, they take some time to settle down or to be stable. So in that case, or when they are in phase of settling, मतलब जब वो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, उस फेज को हम कहते हैं ट्रांजिएंट. और जब वो सेटल हो जाते हैं उसके बाद का जो फेज रहता है उसे हम स्टेडी स्टेट फेज कहते हैं. ठीक है, सो कैपेसिटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, इंडक्टर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है. तो इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उनका जो स्टेबलाइजेशन है वो फिक्स होता है, एक टाइम कांस्टेंट नाम का चीज होता है. तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. सो पहला जो हमारा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है कैपेसिटर. सॉरी, या सो so this is symbol of capacitor, and current through capacitor in time domain, it would be C into derivative of voltage across capacitor. Current through capacitor is C, that is the value of capacitor, into derivative of voltage in time domain. Now voltage across capacitor will be 1 by C integration of current through the capacitor in time domain. So this is the formula for capacitor we are going to use. We are not going to actually use derivative and integration. When we use Laplace form of these equations, it is quite easy to manipulate or to calculate things. Okay, so this is just for your information that this is the base. This is how this is how capacitor and inductors behave to voltages and currents, how these things change in these elements. Next we have inductor. So
properties of inductor are quite opposite to capacitor. That means voltage, this is L, okay, this is not C, VL, voltage in time domain through a inductor is derivative of current through it, IL of t, and current through inductor is integration, sorry, 1 by L integration of voltage across inductor in time domain. ऑलराइट, सो अगर इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप अगर आप याद रख लेते हो तो बाकी सारे चार फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला याद रखता था नॉर्मली, लाइक या भी अभी भी रखता हूँ कि इंडक्ट करंट, करंट हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर भी आई से शुरू होता है, करंट थ्रू इंडक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज। सो एक फॉर्मूला याद रख लिया तो बाकी चारों फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। करंट थ्रू इंडक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। सो अभी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हमें क्या करना होता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हमें ये करना होता है, मान लीजिए हमें एक सर्किट दिया गया है, वी हैव अ सर्किट इन विच we have elements like current source, voltage source, uh, resistances, capacitors and inductors, and there is switch as well. Okay, so either this switch is open or that is in closed state. So at a certain time instance, we either open that switch or we close that switch. So after opening or closing that switch, what are the effects on currents and voltages through or across these elements, that we analyze, and that is called as transient response. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो हमारे सर्किट में कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है, उनमें से दोनों मतलब कैलकुलेट करेंगे, करंट भी कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटर वोल्टेज भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसकी मैं एक हिंट देता हूँ। उसमें आपको पूछा जाएगा कि लेट अस सपोज एट time instance t is equals to 0, this switch closes, and find the current through this inductor, और current, find the current through this even resistance also, resistance में से भी current पूछ सकते हैं। So even though the current is not flowing through either capacitor or inductor, but if these elements are present, they are going to effect on the current which is flowing through any of the element in the circuit. So we have to follow the process itself, राइट। सो कैपेसिटर के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, रेजिस्टेंस के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज और करंट का, इट इज V इज इक्वल्स टू आई आर एंड आई इज इक्वल्स टू V बाय आर। सो नाउ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में एक होता है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, ये दो टाइम होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर। सपोज दिस इज आवर एक्सिस and this is time instance t is equals to 0, okay, and there is some current flowing through or whatever it is, voltage through capacitor or inductor, it doesn't matter, this is just a general concept. So this is the graph of that entity. So just let us suppose at t is equals to 0 we are closing the switch, okay. So just before closing the switch, there is a time instance, and that time instance is called as t0 minus, okay. So t, or it can be written as t is equals to 0 minus. So this will be t is equals to minus infinity, the instance which is just before the t is equals to 0, that is t 0 minus, and just after closing, or opening the switch, the टाइम इंस्टेंस वी कॉल इट एज t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, मतलब जस्ट हमने अभी अभी स्विच जो है क्लोज किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन, this is called as final condition. Now this is called as initial, and at t is equals to infinity it will be final condition, ठीक है। तो जब कोई मतलब जब कभी भी हम ट्रांजिएंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, हमें सब मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, वी हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर, ये प्रोसीजर फॉलो करनी ही है,
जिससे कि हम कोई मिस्टेक कमिट ना करें. सो क्या प्रोसीजर कमिट करनी क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है हमें? वी डोंट नीड टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ टी. वी डोंट नीड टू कैलकुलेट वैल्यूज एट टी इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी. ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. बट आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी, वी हैव टू कैलकुलेट. Sorry, sorry for the disturbance. Okay, so we have to first of all calculate values for time instance t is equals to 0 minus. Then we will calculate values for t is equals to 0 plus. And if needed, or if they ask us, then we will calculate t is equals to t is equals to infinity. इन तीन टाइम इंस्टेंस पे हमें अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं. मतलब इन तीन इंस्टेंस, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी. ओके, सो हमें इन तीन टाइम इंस्टेंसेस के लिए तीन सर्किट ड्रॉ करने हैं और तीन अलग अलग वैल्यूज हमें निकालनी पड़ती है. ओके, सो उसमें से जो अप्रोप्रिएट वैल्यू रहेगी, दैट वुड बी आवर आंसर. दैट इज आवर जॉब टू आइडेंटिफाई विच वैल्यू इज appropriate. Okay, so one more thing is, नाउ यू माइट नो कि कैपेसिटर जो है वो ऐसा नहीं होता ना कि वो सडनली चार्ज हो जाए और वो सडनली डिस्चार्ज हो जाए. सो ऐसा सिर्फ उसी केस में होगा. लेट अस सपोज देयर इज वन कैपेसिटर एंड देयर इज वन बैटरी कनेक्टेड टू इट. सो इन दैट इंस्टेंस और इन दैट केस द कैपेसिटर विल गेट सडनली चार्ज्ड. ठीक है, तो उसी केस में होगा सिर्फ. तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट देयर इज अ स्पाइक इन करंट. मतलब करंट जो है वो अब्रप्टली मतलब इंक्रीज हो रहा है, एक स्टेप है करंट में. सो उसकी वजह से कैपेसिटर एकदम डायरेक्टली चार्ज हो सकता है. दैट इज व्हाट वी कैन से. वो कंडीशन हमें कभी देखने को मिलेगी ही नहीं. मतलब डायरेक्टली कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो कंडीशन हमें ट्रांजिएंट में नहीं पूछेंगे. अगर ट्रांजिएंट में पूछना है तो फिर वो ट्रांजिएंट का एग्जांपल रहा ही नहीं ना. ओके, सो व्हेन लेट अस सपोज resistance is connected in the circuit along with voltage source and capacitance, then in that case capacitor charges slowly. It charges slowly, and when it is fully charged it acts as open source. मतलब अभी वो करंट उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है. जब कैपेसिटर उसके फुल कैपेसिटी पे चार्ज हो जाता है तो इट एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट, एंड करंट थ्रू दैट विल बी जीरो. आई होप यू नो दिस कंसेप्ट. ठीक है, तो जिस तरीके से वो स्लोली चार्ज होता है, तो उसी तरीके से वो डिस्चार्ज भी स्लोली ही होगा. इट विल नॉट बी लाइक, मतलब अभी कैपेसिटर की वैल्यू 10 वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल, 10 वोल्ट है. अगर मैं 2 सेकंड के बाद की बात करूं तो ऐसा नहीं होगा कि 10 वोल्ट से वो डायरेक्ट 0 वोल्ट पे आ जाए. इट मे इंक्रीज, सॉरी इट मे डिक्रीज लाइक 9.6 वोल्ट, 9.5, 9 वोल्ट एंड सो ऑन. इस तरीके से वो जीरो पे आएगा. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर. तो यहाँ पे मैंने ये सारा जो रामायण आप लोगों को बताया, ये क्यों बताया? क्योंकि एक चीज जो है हमें ये सीखने को यहाँ पे मिलती है कि वोल्टेज इन कैपेसिटेंस, वोल्टेज इन कैपेसिटेंस एट जीरो माइनस, वोल्टेज इन कैपेसिटेंस एट जीरो माइनस विल बी इक्वल टू वोल्टेज इन कैपेसिटेंस एट जीरो प्लस. तो इससे क्या होगा कि हमारी मेहनत बच जाएगी. मतलब हमने कैपेसिटेंस की जो वैल्यू, वोल्टेज की जो वैल्यू यहाँ पे निकाली है, वही वैल्यू हमें यहाँ पे भी लेनी है. जस्ट अ सेकेंड, हु इज कॉलिंग मी नाउ? ओके, सॉरी. सो जो वोल्टेज की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है ना कैपेसिटर के लिए, हमें वही वैल्यू यहाँ पे लेनी है. दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये यही होगी. दिस इज फॉर वोल्टेज इन कैपेसिटर. सिमिलरली फॉर इंडक्टर, इंडक्टर में अभी किसके लिए, मतलब वो इस तरीके से बिहेव करेगा. इंडक्टर विल बिहेव इन अ सिमिलर वे फॉर करंट. मतलब जो इंडक्टर में करंट करंट स्टोर करता है ना बेसिकली वो, या फिर फ्लक्स स्टोर करता है, यू कैन कॉल ईदर वे. सो वो स्लोली चार्ज होता है. मैं यहाँ पे चार्ज वर्ड यूज करूंगा. इट इज नॉट एक्चुअली चार्ज बट आई विल यूज दैट वर्ड. सो वो उसी तरीके से स्लोली चार्ज होगा, करंट एक्वायर करेगा, और जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो वो उसी तरीके से करंट को स्लोली ही डिस्चार्ज करेगा या फिर रिलीज करेगा. ओके, सो फॉर कैपेसिटर
voltage at 0 minus and 0 plus is equal, and in capacitor, sorry, in inductor, current at 0 minus and 0 plus is equal. तो ये दो हमारी मेहनत बच जाती है। लेकिन अभी करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर एट 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू करंट थ्रू कैपेसिटर एट 0 प्लस। तो ये वैल्यूज हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेने हैं, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें लिख ही देता हूँ जिससे कि आपको भी मतलब कंफ्यूजन ना हो। सो ये तो लिख दिया मैंने, वोल्टेज in capacitor at 0 minus is equals to voltage in capacitor at 0 plus. Similarly, current in inductor at 0 minus is equals to current in inductor at 0 plus. After that, current in capacitor at 0 minus is not equal to current in capacitor at 0 plus. Similarly, voltage in inductor at 0 minus is not equal to voltage, sorry, वोल्टेज इन इंडक्टर एट 0 प्लस। तो ये सारी चीजें तो हमने सीख ली, मतलब हमें यही चार चीजें निकालनी होती है। ओके, वीसी एंड आईसी, वीसी आईसी वीएल आईएल, तो यही सारी चीजें हमें निकालनी होती है। ओके, so there is one formula for capacitor, I guess it is all right. So you can direct see it has one derivation also, a long derivation, but we don't need to calculate the derivation and all things. Okay, so see, voltage in capacitor at time t will be equal to V into 1 minus e raised to minus t by RC, and RC is time constant. तो ये सब चीजें मतलब हम लिख क्यों रहे हैं, ये वोल्टेज के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है क्यों? बिकॉज व्हेन देयर इज कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस there in the circuit, then there is transient thing, मतलब ट्रांजिएंट का यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। तो उस केसेस में हमें वी सी ऑफ टी इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, हम डायरेक्टली वी का वैल्यू नहीं ले सकते। लाइक हम पिछले कुछ एग्जांपल्स में लेते थे ना कि v इज इक्वल्स टू दिस एंड i इज इक्वल्स टू दिस, तो इस तरीके से हमें नहीं लेना है, हमें टाइम डोमेन के फॉर्म में ही इसे लेना पड़ता है। नाउ rc इज द टाइम कांस्टेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो एट 5 rc, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, एट 5 rc, एट 5 rc कैपेसिटर gets fully charged। सो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना इस पे कि मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी अक्रॉस द कैपेसिटर और एक्स वाई जी, एंड कैलकुलेट द टाइम एट विच द कैपेसिटर इज गेटिंग फुल्ली चार्ज्ड। सो इसके लिए ये टाइम कांस्टेंट या फिर 5 आरसी हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि लाइक मान लीजिए हमें ये फॉर्मूला दिया रहेगा, ओके, एंड टाइम कांस्टेंट की मदद से भी हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। अभी यहाँ पे मुझे वो एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, मे बी मैं नेक्स्ट एग्जाम मतलब नेक्स्ट क्लास में वो एग्जांपल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना समय बचा सकते हो, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट एज ऑफ नाउ। फॉर इंडक्टर, फॉर इंडक्टर टाइम कांस्टेंट इज t is equals to l by r, l by r, okay. सो दिस दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। तो अभी जो हमने इतना कुछ सीखा कि वी एल माइनस जीरो एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ओके, सो उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। सी, दिस इज अ स्विच एंड दिस क्लोजेस, लेट अस सपोज एट t इज इक्वल्स टू जीरो, जो टाइम पहले रहेगा वो रहेगा t इज इक्वल्स टू जीरो माइनस t इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, एंड t is equals to 0 plus and t is equals to plus infinity। तो ये चारों चीजें ध्यान में रखनी है। It is not important but still I am writing it. Alright, I hope you don't have any doubt, no questions or nothing in the chat box, so that means you don't have any doubt. Alright, so let's take one example. This is a circuit, here is one switch and one resistance is there, again another resistance is there,
then one inductor is here, and lastly we have a capacitor. Value of capacitor is 2F, 2 farad, it is 2 ohm, 1 ohm, it is 1 Henry, and this is 2 volt. And this switch is opening at t is equals to 0. तो देखो मतलब इस एरो से हम डिफाइन करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस स्विच इज ओपनिंग और क्लोजिंग। यहीं पे अगर ये एरो ऐसा होता तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ओपन था और t इज इक्वल्स टू 0 पे ये स्विच जो है वो क्लोज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ हमें सबसे पहले सॉरी तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आई एंड वी एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस, मतलब स्विच क्लोज होने से पहले वाली जो वैल्यूज है या फिर पहले वाली जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पे निकालनी है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइट, ओके माय बैड, दिस स्विच या दिस स्विच इज ओपनिंग एट t इज इक्वल्स टू 0, दैट्स फाइन। सो इसका मतलब ये जो स्विच है ये पहले से क्लोज था, ये पहले से क्लोज था। तो मैं इसे थोड़ा सा फिर से रीड्रॉ करता हूँ इस सर्किट को, तो किस तरीके से ये एक्ट करेगा। सी, अब ये स्विच क्लोज है, यहीं पे बताता हूँ, सॉरी। तो ये स्विच क्लोज है, तो जो करंट यहाँ से 2 वोल्ट सोर्स में से जो कुछ भी करंट आएगी वो इस आई में भी इस इंडक्टर में भी जाएगी और इस कैपेसिटर में भी जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये इंडक्टर भी चार्ज होगा, इंडक्टर भी उसके फुल पोटेंशियल को ग्रास्प कर लेगा या फिर अक्वायर कर लेगा, और जो कैपेसिटर है वो भी उसके फुल कैपेसिटी पे यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, बिकॉज ये जो स्विच है ये इनफाइनाइट टाइम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर जो है वो भी एनर्जाइज्ड है और जो कैपेसिटर है वो भी फुल्ली चार्ज है या फिर फुल्ली एनर्जाइज्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, सो इन दैट केस मैंने आपको कहा था कि जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है देन इट एक्ट्स एज अ ओपन सोर्स, इट द करंट थ्रू इट इज जीरो, एंड व्हेन इंडक्टर इज फुल्ली चार्ज्ड, मतलब वो फुल चार्ज हो जाता है, तो वो एक शॉर्ट सर्किट का मतलब इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब वो जो करंट को है वो ग्रास्प नहीं करेगा, जो भी करंट उसमें से आ रही है वो पूरी करंट उसको ट्रांसफर कर देगा या फिर इट विल गिव ऑल द करंट। दैट मीन्स कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड एंड इंडक्टर इज क्लोज सर्किटेड। अभी यहाँ पे वैल्यूज मैटर नहीं कर रही है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो जो सर्किट है, नया सर्किट, वो कैसा रहेगा, देखो स्विच तो क्लोज ही है, मैं ये जो सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं t इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे, और जिसे कि हम फाइनल कंडीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये पहला रेजिस्टेंस हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज सोर्स है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स एज इट इज है, और जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर को मैं अभी यहाँ पे ओपन कर दूंगा क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, और जो इंडक्टर में बोल रहा था ना, इंडक्टर को मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दूंगा क्योंकि ये भी फुल्ली एनर्जाइज हो चुका है। सो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा, राइट। एनी डाउट टिल दिस कि ये सर कैसे हुआ, मतलब कैपेसिटर को ओपन क्यों किया और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट क्यों किया, यहाँ तक कोई डाउट गाइस? इफ एनी प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, इफ नॉट प्लीज पुट नो। गाइस आर यू विथ मी? नो डाउट, ओके, ऑल राइट, फाइन, नो डाउट, क्लियर। सो अभी you can tell me what can be the, okay sorry my bad, I have to write the values of uh, resistances, right? So this is 2 volt. Now what will be the current through capacitor? This is vc 0 minus, sorry मैं करंट बोल रहा हूँ, वोल्टेज लिख रहा हूँ, दिस इज ic 0 minus, it would be, how much it would be guys? कितना करंट है अभी यहाँ पे? जीरो ना?
zero current. It will not allow the flow of current because it is fully charged. So IC0 will be 0 यहाँ पे. ठीक है. Now if current is 0, then VC0 minus will be 0, which is again equal to VC0 plus. ठीक है. Now current through this inductor, this is IL0 minus. So it is, see, दिस इज जीरो करंट, मतलब जो कुछ भी करंट जाएगी ये यहीं से फ्लो होगी इस सर्किट में. ऑलराइट. सो 2 वोल्ट का सोर्स है, 1 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो मतलब कितना ओहम करंट फ्लो होगी यहाँ पे? 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी. ओहम में नहीं, एम्पियर में मेजर करते हैं हम. सो आई एल जीरो माइनस विल बी 2 एम्प्स, एंड विच इज अगेन इक्वल टू how much? Which is again equal to, I guess, IL 0 प्लस. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल गई. अभी IC0 की वैल्यू मिल गई. VL0 की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी है. VL0 की वैल्यू क्या रहेगी गाइस? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. व्हाट विल बी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? कैन एनीबॉडी टेल? VL0 की वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है यहाँ पे. अभी IC0 निकाला हमने, VC0 निकाला, IL0 निकाला, VL0 निकालना बाकी है. हमें 4 क्वांटिटीज निकालना है ना. So what can be VL0? Voltage, okay, Raman says it's 0. Yeah, it is. Is it? Yeah, it should be 0 na. Yeah. No, VC, not VC. It is VL. Voltage across. Yeah, yeah. Okay, right. All right, all right. So VC0 is equals to VL0. मतलब दोनों भी करंट सेम ही है. तो यहाँ पे जो VL0 है वो रहेगा 0. राइट. सो यहाँ पे हमने T इज इक्वल्स टू -0 पे सर्किट कैलकुलेट कर लिया है. अभी हमें फिर से ये सर्किट रीड्रॉ करना है. at what position or at what time instance? जस्ट आफ्टर स्विच ओपन हो चुका है. अभी इस स्विच को हम t इज इक्वल्स टू 0 पे ओपन कर रहे हैं. ओके, इसे ओपन कर रहे हैं. तो नाउ इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे, विच इज इनिशियल कंडीशन अगेन. ऑलराइट. सो this is switch is now opened. There is one resistance, 1 ohm resistance. This is again a 2 ohm resistance, and this is a voltage source. All right. Now what happens with resistances and sorry, what happens with inductor and capacitor? तो यहाँ पे अभी जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है. फुल्ली चार्ज है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज सोर्स था ना, V इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो उसका कनेक्शन कट हो गया. मतलब अभी वो चार्ज नहीं हो रहा. इट इज नॉट नो मोर इन द चार्जिंग मोड. ओके. सो इट विल बी इन द डिस्चार्जिंग मोड. तो अभी वो डिस्चार्ज हो रहा है. तो डिस्चार्ज हो रहा है मतलब क्या? इट विल एक्ट एज अ इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट. इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट. ऑलराइट. सो मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ. ठीक है. सो अभी जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर फुल्ली चार्ज था या फिर फुल्ली एनर्जाइज था. मतलब उसमें कुछ करंट उसने स्टोर कर ली है, फ्लक्स को स्टोर कर लिया है. तो अभी वो उस फ्लक्स को भी रिलीज करेगा. ठीक है. सो दिस इज द इंडक्टर एंड विच इज एक्टिंग एज अ करंट सोर्स. दैट इज 2 amps. This is 1 ohm. This is 2 ohm. ऑल राइट. सो अभी इस कंडीशन में हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू हमें निकालने की जरूरत है. सी, वी हैव VC0. VC0 कितना है? 0 है. सॉरी, VC0 प्लस कितना है? 0 है. मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो वो 0 ही है. दैट इज सेटिस्फाइड. ऑल राइट. उसके बाद में हमारे पास क्या था? IL0 प्लस था. IL0 प्लस 2 एम्पियर, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है. सो VC0 प्लस वी हैव VC0 प्लस हमारे पास है
IL0 प्लस भी हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, IC0 प्लस निकालना है और VL0 प्लस निकालना है, राइट? वी हैव टू calculate these two things. So how do we calculate it? See, IC0 plus की अगर हम value निकालें, so IC0 plus will be how much, guys? Any idea? IC0 plus, which is quite visible in the circuit. It is मतलब इतना कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है. IC0 plus जो करंट जो कैपेसिटर वाली ब्रांच थी, नहीं रमन, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ सिली मिस्टेक. Is it 2 ampere or is it minus 2 ampere? See the direction. Yeah, it is minus 2 ampere. See guys, this is the direction of IC 0 plus, but this 2 ampere cannot go here because it is open circuit here. यहाँ पे वो जा नहीं सकती, तो ये 2 ampere है, वो यहीं से आके यहाँ पे जो होगा वो 2 ampere होगा. Actually in this direction it is 2 ampere. That means IC 0 plus will be minus 2 ampere. So ये IC 0 plus आ गया. अभी VL 0 plus, who will tell? VL0 plus, very easy. VL0 plus. Voltage across inductor. So see, this branch is inductor, although it is looking like a current source, but this branch is for, this is acting as an inductor. Okay. So कितना होगा voltage across this branch? देखो ना guys, see, minus 2 ampere, or let us suppose 2 ampere is flowing through this 2 ohm resistance. That means positive negative 4 volt यहाँ पे generate होगा, यहाँ पे appear होगा, right? So this same current is, sorry, this same voltage is across this, isn't it? यही है ना? तो VL 0 plus will be minus 4 एम्पियर, नहीं वोल्टेज होता है, V होता है, ठीक है? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. नाउ एट लास्ट स्टेज, अभी लास्ट स्टेज में हमें क्या करना है? लास्ट स्टेज, दिस इज फाइनल, टी इन्फिनिटी. टी इन्फिनिटी पे गाइज स्विच तो हमारा ओपन ही रहेगा, स्विच हमारा ओपन ही रहेगा, एंड जो हमारा करंट सोर्स है ना, वो करंट सोर्स फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा. ओके, इट इज फुल्ली डिस्चार्ज, एंड एट द फाइनल स्टेज, नाउ अभी करंट सोर्स जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब इसका मतलब उसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. दैट मीन्स द कैपेसिटर इज एक्टिंग एज ओपन सोर्स अगेन, बिकॉज देयर इज नो करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट. ठीक है, ये देखिए, वन मतलब एक के बाद एक, मतलब स्टेप से डिपेंडेंट है. ठीक है, सो देखो, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, फाइनल. सो इसमें हमारा स्विच जो है वो तो ओपन ही है, ये जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज रहेगा, ये जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है ये भी एज इट इज रहेगा, एंड दिस वोल्टेज सोर्स, दिस डजंट मैटर एट ऑल, इजंट इट? एंड लास्टली जब हम बात करेंगे हमारे इंडक्टर की, तो वो तो फुल्ली अनएनर्जाइज हो चुका है, मतलब वो कंप्लीटली उसका ही इज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल. ठीक है, और ये जो हमारा कैपेसिटर है ये यहाँ पे एज ओपन सर्किट यूज एक्ट करेगा. सो दिस इज 2 ओहम, दिस इज 1 ओहम, this is 2 volt, and this will be the circuit for t is equals to infinity, positive infinity. So यहाँ पे IL infinity की वैल्यू कितनी है? IL infinity की वैल्यू है 0. VL infinity कितनी है? VL infinity भी है 0. IC infinity, IC infinity कितना है? IC infinity 0, and IL infinity, sorry, what is remaining now? VC ना, yeah, VC infinity will be again 0. ऑलराइट. सो इस तरीके से हमें 3 सर्किट ड्रॉ करने होते हैं और इसका एनालिसिस करना होता है. ठीक है, सो गाइस डोंट वरी, मुझे पता है कि आपको किस चीज में अभी फिलहाल डाउट है. यू हैव डाउट सर, ये कैपेसिटर ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट कब हो रहा है, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर. डोंट वरी अबाउट इट, विल टेक
टू थ्री मोर एग्जांपल्स, और मैं कुछ ट्रिक्स भी है, मतलब जो कि वर्क करते हैं एटलीस्ट मेरे लिए, यूसी आपके लिए वर्क करते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास, that would be on Saturday. All right, so that's it for today, guys. Nothing else. Okay, so you can leave the class. Thank you. Bye bye, and I will share this with you on the group. Okay, bye. Yeah, no problem, Raman. Bye.